artificial satellite, a man-made machine which revolves around the earth under the action of gravity. A man-made machine which revolves around the earth under the action of gravity is called artificial satellite. इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि अगर हम किसी चीज़ को ज़मीन पे खड़े होके थ्रो करते हैं तो वो कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वापस ज़मीन की तरफ आ जाती है, लाइक प्रोजेक्टाइल्स। तो अगर हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी बढ़ाते जाएं तो उसकी रेंज बढ़ती जाती है, लेकिन अल्टीमेट वो वापस ज़मीन पे आके गिरती है। लेकिन एक स्पीड ऐसी भी हो सकती है किसी बॉडी की जिस पे अगर उस बॉडी को थ्रो किया जाए तो उसका जो कर्वेचर्स बनता है वो अर्थ के कर्वेचर्स के पैरेलल हो जाता है और वो फिर बॉडी ज़मीन पे नहीं गिरती। तो दैट इज़ द आइडिया ऑफ द सैटेलाइट्स। तो प्रैक्टिकली जो है सैटेलाइट्स को रॉकेट की मदद से कुछ हाइट पे ले जाते हैं और वहाँ से फिर उसको हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया जाता है विद दैट स्पीड जो अभी हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सैटेलाइट्स। नंबर 1 लो फ्लाइंग सैटेलाइट और नंबर 2 हाई एल्टीट्यूड सैटेलाइट। लो फ्लाइंग सैटेलाइट्स जो होते हैं, सैटेलाइट्स हैविंग मैक्सिमम एल्टीट्यूड 400 किलोमीटर्स। ज़्यादा से ज़्यादा हाइट जो बनती है ज़मीन की सरफेस से, एल्टीट्यूड का मतलब यही होता है ज़मीन की सरफेस से जो बुलंदी है उसको कहा जाता है। मैक्सिमम एल्टीट्यूड जो है वो 400 किलोमीटर और उससे कम। इस रेंज के अंदर ट्रैवल करने वाले सैटेलाइट्स जो हैं उन्हें लो फ्लाइंग सैटेलाइट्स कहा जाता है। सपोज करते हैं कि ये अर्थ है और ये जो चीज़ है दिस इज एच, सो दिस एच इज लेस देन आर इक्वल टू 400 किलोमीटर फॉर these low flying satellites. This height is less than or equal to 400 kilometers. So since satellite revolves around the earth under the action of force of gravity, since satellite revolves around the earth under the action of gravity, that is force of gravity provides centripetal force, so we can write where r orbital जो radius है, radius of earth plus h, so the orbital speed जो आ जाएगी this is g m e r e plus h इसका under root, but h is very small than r e, that's why r e plus h is equal to r e, hence orbital speed is g m e over r e under root. All the parameters are constant and it means orbital speed of the low flying satellite is constant, and another formula हम इसको चेंज भी कर सकते हैं और उसमें since g is equal to g m e over r e square, then g m e is equal to g r e square. So the orbital speed of the satellite is equal to g m e over r e under root. This is equal to g r e square over r e, this is g r e under root. This is equal to 9.8 into 6.4 10 per 6 under root, and this is equal to 7.6 10 per 3 meters per second या 7.6 kilometers per
Second, this is the at least value of the orbital speed for the low flying satellites. For the low flying satellite, this is the least numerical values of the orbital speed. 9. For high altitude satellite, gravitational force provide centripetal force GMEM over is equal to mv square over r, and GME over r is equal to square of the orbital speed, and then this is equal to GME over orbital speed. This is equal to, it is clear from this equation that orbital speed is inversely proportional to the square root of the orbital radius. For the high altitude satellites, the orbital speed is inversely proportional to the square root of the orbital speed. इसका मतलब क्या होगा कि जितनी जितनी हाइट बढ़ती जाएगी, अब ये बात हो रही है मोर देन 400 हाई एल्टीट्यूड्स की बात हो रही है, तो उनकी जो ऑर्बिटल स्पीड होगी वो कम होती जाएगी with the increase in the orbital radius.